everyone, thank you so much for joining in. I hope you are doing good. I am Sonal Jain, your host, and I welcome you to a brand new episode of Gupshup with Pals. In today's episode, we have Mr. Shreyas Bajoria, who is a writer, researcher, tedx speaker, businessman, and a social entrepreneur. He is also pursuing professional courses along with running his family business. He initiated MASH project Kolkata chapter, under which he did an ample number of events campaigns in collaboration with many reputable organizations around India, seeking a view to have an impactful change in the society. He was also one of the founding members of the Soch Network and has been working as a social entrepreneur for the last 6 years now. He is currently into building a community through his Dak Shiva Foundation, which aims at creating a collectives of CSOs, activist individuals from the southern belt of Bihar. He also wrote a book named Sakshiyat, which is doing wonders around media. So presenting to you a man who adorns multiple hats and lives by the philosophy of I dream and I do things, Shreyas Bajoria. Hi Shreyas, how are you? Hi, I'm great. Thanks. How are you? I'm good. I'm really excited for this conversation right now. Yeah, likewise. Very good. I am very, very excited for this. Still looking forward. Yeah. So what I've been hearing about your podcast and your show and for all the previous videos. Yeah, I'm really looking forward to this. Sure. Okay, so I'll begin with as I know that you are pursuing both CA and CS along with your family business. So it becomes a little hectic sometimes. So how do you manage to, give your time for social works and all? Yeah, so there are various different things that I try to aim, but then, everyone gets 24 hours, limited 24 hours, and one need to optimize the most number of hours that they have with themselves. And I think it's more about personal choices rather than, anything else, because it was my choice. It was my decision to get into business, family business. It was my decision to continue with my studies. And so when you take the onus upon yourself that come whatever may be, I'll do it. So irrespective of tries and different attempts, you will definitely do it. I think that is one thing that continuously goes in my mind, that I'll just try to give my best shot, whatever happens. How many time it takes, how much time it takes, but I'll definitely do it. So just that one thing, that it continuously keeps driving you forward. And trust me when I say this, 24 hours is more than enough. If you plan it well, if you keep looking forward, keep planning things in your mind. When this gets over, I'm gonna go do this. So it all trickles down, right? If you start focusing on one, all the other things, starts optimizing. I think it's more about the productivity and optimization, and less about that. How do you do it? So it's just that you need to be a little bit better with planning, and I think it's more about optimization of the time. Great to know, because मुझे भी ऐसा लगता है कि what you are telling, I'm totally agreeing with you, because बहुत ऐसा हम अभी जिस एज में हैं, तो उस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है जो हमें हो जाते हैं जिससे, बट रादर देन अगर आप एक पर्टिकुलर रूटीन में चलो तो बहुत ज्यादा वो टाइम फ्रेम वर्क कर जाता है मेरे ख्याल से. टोटली ये चीज तो होता है यार. डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलेंगे, आई थिंक दैट्स लिटिल प्लेजर ऑफ लाइफ, लिटिल गिल्ट ऑफ लाइफ, बट you need to know where to stop, where to stop with it. I think that's the most important time. Even I have my cheat days, I have my fun days, my friends, and sometimes even I feel like today was one of them. Like you feel like okay, आज कुछ नहीं करेंगे यार, मतलब ठीक है, बाकी दिन बहुत काम कर लिया, आज सोते हैं. And then you aim at sleeping like जैसे 8 घंटे के हो जाए, 10 घंटा सो जाए, 11 घंटा सो जाए. So I think that's okay, but you need to know where to stop it, right? That's the most important thing, because आप अगर वो चीज नहीं कर पाओगे ना, तो फिर बाकी चीजों को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है. It's very, very essential to know, there's no problem, no harm in having a little getaway, little cheat, but then you should know where to stop with it. And that's the most important thing. Yeah, sure. Totally agree. Okay, so talking about you, what was your first instance when you decided that, social entrepreneurship is a calling? So I even talked about this at length in my first tedx talk event. So I never decided that I want to go into social entrepreneurship. I had always been doing things
for others. I won't say society, and I'm moved by social welfare and charity, all of that. Okay, that sounds good, but it's just in me that I always wanted to make the next person better, whether it be a privileged person, someone studying with me, sitting with me, or be someone who's unprivileged, right? And that mostly comes with the fact that I see that there's a deficit in the people in the society, and that deficit needs to be bridged, right? And when I think that, two things, that you are able to do something and you're willing to do that, right? I have the ability that I can bring in little bit change, I can upskill people with different things. I can teach people, and I am able to do that. I'm able to devote that, right? So I think that's the most important thing. And even in school, I used to, teach people, teach juniors, even teach, right? So that thing, there was not particular trigger moment, but then yeah, that thing kept in me when I moved out to Kolkata, when I moved to St. Xavier's and all. So that is where I saw, okay, this thing I can actually upskill. I can actually, there's a whole different avenue, whole different world of possibilities existing. And that is when I started trying out different things. I tried a lot of, social organizations like MAD, ISEC. I've talked about this. Then we stumbled upon MASH, and a couple of my friends and seniors, we started on MASH. And that's how the journey continued. So I think it was more about there's a lock and I'm trying various keys and just seeing what fits in, right? It's just that. So I tried a lot of different things, and then that is when it hit me that this is something that I can actually do. This is something that I can mostly upscale, right? Because I always feel that if you ask a kid what he wants to do, he'll say I'll be a doctor, an engineer, an astronaut, XYZ, right? That's a hard skill. Right, the hard skill is something that you want to do, but how do you get it? It's the soft skill. The speaking, the leadership qualities, all of those things, and that is something is how you go on doing that thing. A hard skill tells you what you have to do, but the soft skill something tells you how you have to do it, and that is where my work, comes in. That I want to bridge that deficit. There are a lot of organizations teaching you how to become an engineer, how to become a doctor, all the other things. But ये कैसे bridge करना है ना, मैं अपना एक छोटा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी तरह bridge कर सके, right? बस यही है. बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम लिटिल ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टफ्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज बहुत जरूरी है. एंड अभी के टाइम में भी जैसे देयर आर मेनी फील्ड्स, लाइक अभी जैसा पोस्ट पैंडेमिक अभी ऐसा हो रखा है कि पीपल आर मोर इनटू आर्ट एंड सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट. तो एंड कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है. सॉफ्ट स्किल में डेफिसिट है जिसको ब्रिज करना चाहिए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? हार्ड स्किल तो आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, इतने सारे avenues मिल जाएंगे, बट सॉफ्ट स्किल इज समथिंग यू डेवलप विद एक्सपीरियंस. तो वही है. लॉकडाउन में लोगों को ना वो थोड़ा सा पीपल कॉलिंग वाला बात आ गया. इट इज माई कॉलिंग की माई कॉलिंग थी. आई हैव बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर, और आई हैव बीन वर्किंग एज अ सीए और एज अ डॉक्टर, बट व्हाट इज माई कॉल? So my call is like I can also sing, I can also write, or I can also paint. I can also learn a different language. So I think वो वाला थोड़ा सा call वाला बात आ गया कि since I have a time now at my hand, what are the things that I can try? And I think that's very good, because ये बहुत पुराना एक debate है कि ultimately machines will take over us. So that is where this would come in, right? Every abstract thing in the universe will be done by human. टोटली एग्री, टोटली. आपने जैसे बोला कि अभी उस चीजों पे लोग कॉलिंग के लिए बात कर रहे हैं, और मुझे अब मैंने ऐसा अभी जो 2 साल का फेज था उसमें ऐसा मैंने देखा कि लोग स्विच भी कर रहे हैं, अपने करियर्स भी स्विच कर रहे हैं एज कम्पेयर पूरा. होना ही ये चीज तो होता ही है. आई थिंक अब तक प्रोफेशन की बात होती थी, लॉकडाउन में पैशन की बात शुरू हुई, एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड वी आर मर्जिंग बोथ ऑफ दैट. Right, so I think that's a very great thing. Even जैसे आप ही के शो में I think कुछ एपिसोड में पहले रिचा आई थी शायद, यहाँ आएंगी जो भी है. So उनका भी पैशन था. She's a very talented person, and then उनका भी पैशन, and then now she had gone into full time
teaching and the illustrations and creative design and all of that. So that is something which I think lockdown has propelled and act as a catalyst. So yeah, that's about it. Yeah, I totally agree to you. So, talking about your MASH project, firstly, congratulations on that. That was a huge, huge success. So, you started MASH project with a view of promoting social entrepreneurship. You know? So, what are the key lessons you have drawn from that project that have aided your social entrepreneurship career till now? एक लेसन है सबसे बड़ा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड नहीं है. आई थिंक लाइफ के कोई भी एंटरप्राइज से कनेक्टेड है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड है. द नेक्स्ट मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, लाइक आई एम अ ह्यूज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, एंड उसमें ना एक बहुत फेमस इंटरव्यू है जिसमें एक लाइन है कि आई फॉरगेटिंग द नेम. सो उसमें बोलता है कि as a cricketer, as a batsman, you get hit on the chest, you get hit on the head. Sometimes there are ball that just touches you. Sometimes the ball just passes by your ears, but you have to, shrug all of those in a moment, throw it away, and focus on the next ball. Don't think कि next over क्या हो रहा है, क्या इस over के बाद कौन आएगा, and all of that. Think of, because next ball is the most important thing, and I think life में सबसे important भी वही है. The next moment is the most important thing. Of course, आप plan करो, but अभी next क्या करोगे ना, ये सबसे important होता है. And I think that is something that MASH has taught me in detail. कि आप एक event कर रहे हो, ठीक, आप future की planning करो, वो चीजें करो, तो next moment आप क्या करोगे ना, वो event कैसे close करोगे, या event में आए हुए लोगों को कैसे thank करोगे. So I think वो बहुत important हो जाता है. I think sometimes we undermine the importance of next moment. ठीक है, सो वो बहुत जरूरी है. एंड नॉट ओनली इन एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी. आई थिंक एवरीथिंग इन आवर लाइफ, इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट मोमेंट इज एवरीथिंग, बहुत इजी हो जाएगी चीजें हमें ब्रेक डाउन करने के लिए. राइट, सो जस्ट एंड इसी का एक पैरेलल कंपैरिजन आता है जो बहुत लोग करते हैं, स्टार्ट स्मॉल. ठीक है, कि छोटी छोटी चीजों को करो, फोकस करना शुरू करो. लाइक इफ समवन सेज आई वांट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. सो एक बहुत फेमस बुक है, थ्योरी ऑफ में बोलता है ये, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर. ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन में मैं काफी बार उसके बारे में बोलूंगा, बिकॉज दैट्स द वन बुक दैट प्रोपेल्स मी अ लॉट. सो उसमें वो बोलते हैं कि 2 मिनट रूल होता है कि अगर आपको कुछ भी करना है, सो आप 2 मिनट करो उसको बस. अगर आप चाह रहे हो कि यार आई एम गेटिंग लेजी, आई शुड स्टार्ट एंड गो फॉर अ वॉक, या I'm thinking to write something, I think I should write something. Yeah, I'm getting bored at my job, I think I should start doing something. So आप सबसे पहले 2 मिनट दो उसको, and then आप देखो कि वो खुद ही आप उसमें बेटर होने लग जाओगे. If you want to run, just go out and start walking for 2 minutes. If you want to, do something, if you want to write, just sit and start take a paper and start writing for 2 minutes. हरी देख के 120 सेकंड, that's it, not more. ठीक है ना, खुद देखोगे कि आपको और इच्छा होने लगेगी करने के लिए. राइट, सो ये बहुत जरूरी है. अगेन it draws parallel from my earlier point. Next moment is most important thing. Yeah, totally. So ये सबसे बड़ा टेक अवे रहा है मैश में, कि आपको अगले मोमेंट के बारे में आप सोचो, डोंट थिंक ज्यादा आगे. ठीक है, of course you plan things for forward, you act in next moment. Right, ये बहुत जरूरी होता है. मुझे मैश में भी आई थिंक हर जगह ही आज वो हेल्प करता है. Yeah, lovely. Because आपने जैसे बोला कि atomic habits की बात की, atomic habits, और there are books and I guess I have seen a film like that also. I'm not recollecting the name, but I've seen such a film. It's not Bollywood, so it's a Hollywood film, and in which these all concepts have been expressed in a very. बहुत सारी है ऐसे तो काफी सारी. There are, if you start looking positives in a movie, there are a lot of things that you can bring out. Right, कि किसमें क्या अच्छा है. So चीजें मूवीज तो काफी ही अच्छी है जिसमें आप चीजें निकाल सकते हो. जैसे एक बहुत ही फेमस मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. So ओवरऑल एट द सरफेस आप बता सकते हो कि
never give up वाला बात है कि you don't give up at any point of time, but then if you start breaking it थोड़े थोड़े पार्ट्स में, तो जो प्रोटैगनिस्ट है हमारे, जो मेन इंटरव्यू के लिए जब वो जाते हैं इन पेंट वाले वेस्ट एंड ऑल में, सो जिस तरह का वो 3-4 मिनट का क्लिप है, यूट्यूब पे भी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इंटरव्यू सिंग करके सर्च करना कभी, कोई भी जो भी ये देख रहा करिएगा कभी, सो उसमें आप उनका आंसर सुनना, ठीक है। ही एंटर्स द रूम and he shakes hands with everyone. Despite of his physical condition, he is in a waist, मतलब not a coat even. He is in a waist, and then वो पूरा ऊपर नीचे पेंट में है, और and then he comes and he shakes hands with everyone. वो सब शॉक है वो क्या कर रहा है, right? So एक छोटी छोटी चीजें you start observing things ना, आप बहुत चीज लर्न करते हो। इवन देखते कि कोई पर्टिकुलर बुक खराब है या कोई पर्टिकुलर मूवी खराब है, होती है, और आईटी सरफेस होते हैं ये चीजें, बट देन इफ यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन तो काफी अच्छी चीजें सीखने मिलती है उससे। बिल्कुल, राइट। सो मैं तो बोलता हूँ बहुत सारी मूवी से आप बहुत चीजें सीख सकते हो, वो चीज तो है ही। बिल्कुल, एंड मूवी बुक से बेटर कोई बड़ा लर्निंग गाइड नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, can't agree more to you. Okay, so coming to our next question, first of all, congratulations on setting up the Daksh Yuva Foundation. And so through Daksh you are planning to build a community. So what is the basic idea or a concept against that? So what are the key factors? What are you seeking from it? चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चन में आपसे करता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर जो होता है, yeah, sure. So basic what do you think, what do you make of it? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछो तो मेनली वो चीज करते हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, और हाँ, सो बेसिक मतलब ऑन दी सरफेस वेरी बेसिक, हाँ लिटरली वही होते ही है कि इट्स अबाउट द वेलफेयर, राइट। एंड देन हमारा सेक्टर है ना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या डेवलपमेंट सेक्टर जो कहते हैं मतलब ओवरऑल, सो वो में आप वेलफेयर से चीजों को नापते हो, आप इम्पैक्ट से चीजों को नापते हो, आप मोटिव से चीजों को नापते हो। वी आर द ओनली सेक्टर इन दी, आई कैन से द बेसिक इन द इंटायर ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रेस, या आई थिंक इट्स नॉट वेरी फेयर टू पुट इट इन ह्यूमन कल्चर। आई थिंक जितने भी सेक्टर्स है ना वेयर पीपल गेट एम्प्लॉयड एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दिस इज द वन मेजर सेक्टर जो कि which is run on motives and impact rather than on profits. Yeah. Right. So when you take the money out of equation, of course there's a money involved. People are employed, people get money out of it, and there's a good money involved. But the overall function is welfare, right? But जब आप welfare पे work करते हो और जब आपके indicators impact है, जब आपके indicators motives है, so उस समय आपको you forget profits and you think of people, and that is where I think the idea of community, creating a community comes in. एक like minded लोगों का साथ में एक ग्रुप बनाओ जो अपने स्तर पे अपने कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इकोसिस्टम में अच्छे काम कर रहे हो, आप उनके साथ एक ग्रुप बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ग्रुप के साथ काम करते रहो, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी इंडिविजुअल तौर पे भी आप कुछ ना कुछ करो। एंड these can be not organizations from your city or your place, it can be anywhere, thanks to 2020, 22, 21, whatever, these can be anywhere. And the idea behind, in fact the idea behind MASH was same, and the idea behind Daksh is same on the surface. Working may be different, people may be different, the things, how things are worked are different, but then the overall idea, general idea remains the same. Bring like-minded people, organizations together in whatever form, physical events, online events, जो भी करने हैं आपको, जैसे भी छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके, इनिशिएटिव्स, कैंपेन्स जो बोल दो, ये आइडिया इज गेटिंग इन हाउस मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर या बाहर के लोग एज फॉर्म्स ऑफ इंटर्न्स, फेलोज या पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, टू गेट देम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ अ वेलफेयर। अब ये वेलफेयर ना बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट? सो अब किसी के लिए वेलफेयर इज जस्ट लर्निंग अ न्यू थिंग, लर्निंग अ न्यू स्किल, या अपस्केलिंग अ सर्टेन स्किल, या नोइंग समथिंग मोर। किसी के लिए वेलफेयर होता है गेटिंग
2 टाइम का खाना, किसी के लिए वेलफेयर होता है प्रेजेंट सिचुएशन से खुद को बचाना, किसी के लिए वेलफेयर होता है स्कूल जाना. सो आई थिंक वेलफेयर काफी एब्स्ट्रैक्ट चीज है एंड हर ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग देयर बेस्ट. ठीक है, लास्ट आई चेक्ड इंडिया में CSR जो है, CSR मार्केट, it's more than 15,000 करोड़ मार्केट. ठीक है, एंड सो मनी प्रॉब्लम नहीं है, वह बहुत ऑब्वियसली मनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन एंड प्रॉब्लम इज कि सब साथ में सब तो नहीं बट छोटे छोटे ग्रुप्स में एक्ट नहीं हो रहा है. मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. आज लेजस से बिहार में, या कोई आप गूगल भी करते हो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन बिहार, सो आप खुद बताना कितने आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. नंबर्स जो मिलेंगे एक्टिव नहीं होंगे, जो नंबर्स मिलते कितने का मेल का रिप्लाई नहीं आने वाला. सो काफी डिस्पैरिटी है. With MASH we started off the same idea that we want to create an ecosystem of organizations where they can work together, and I think I take pride in the fact that MASH was the organization in Kolkata, in West Bengal, to create that ecosystem and bring more than 50-60 organizations together through different events or venues. And आज वहाँ पे एक ecosystem exist करता है, even though we are not very active there. So people still credit that it was all started as MASH 5-6 years back. So that's the idea I want to start with Daksh, that I started Daksh with. We have been partially successful. We are still working. I think it gets better every day. Just keep on moving, because इस सेक्टर में सबसे बड़ा आपका कोई बैलेंस शीट नहीं बनता, फाइनेंशियल बैलेंस शीट. इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका इम्पैक्ट होता है, नंबर ऑफ पीपल दैट यू आर एबल टू रीच, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर एबल टू डू, चाहे आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, अगेन थैंक्स टू 2021-22. सो ये तो आइडिया बस वही है कि एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है. अब इकोसिस्टम सिर्फ ये नहीं होता कि 4 ऑर्गेनाइजेशन मिल गए साथ में प्रोजेक्ट कर रहे. इकोसिस्टम ये भी हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारी एक प्रोजेक्ट की वृद्धि, तब उसमें भी तो इकोसिस्टम ही बिल्ड हुआ जहां हमने 600-700 फैमिलीज को टच किया. सो वी ब्रॉट पीपल हु वर अफेक्टेड बाय फ्लड एंड ऑल द अदर थिंग्स, एंड देन हमने अपने सारे रिसोर्सेज को क्राउड सोर्स किया. ठीक है, एंड जितना भी किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई डोनेट किया, किसी ने मॉनेटरी डोनेट किया, हमने खुद भी इंटरनली जो ट्राई कर लिया, एंड देन वी ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड वी ट्राई टू हेल्प पीपल, राइट. सो वही है, इकोसिस्टम बिल्ड करना वही होता है. अब इसमें बहुत तरीके का चीजें जो हम करते हैं, जो कोशिश भी कर रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके की चीज करें. आई होप वी गेट सक्सेसफुल इन डूइंग थिंग्स दैट वी प्लान. So basic idea is bringing, people who need stuff with people who can. वही है. Totally get it. And पहली बात तो I'm sure you'll get a maximum amount of the impact you are trying to do. So Right. Talking about what you just told about MASH and this Daksh. So you have done MASH in Kolkata. So why you chose Bihar as per now? So again, coming back to few of the earlier answers that I talked upon, the ability and willingness. Right. So because of my experience with different organizations in Kolkata, with MASH, with Global Shippers, or with other partner organizations, जो भी है, and because of my willingness to do something for the people of Bihar and South Bihar, and maybe structurize the entire ecosystem here, I think that is why I didn't think upon कि मुझे करना है. I just thought in a way कि यार ये कर सकते हैं. ठीक है, so बस वही है कि thanks to lockdown I had to move back to my hometown Bhagalpur, and बहुत बड़ा गैप है. The kind of work that I had been doing back in Kolkata, यहाँ बहुत बड़ा गैप था उस चीज को लेके, एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं. I think we have moved थोड़ा बहुत towards the positive. The journey is still very long that we are aiming at. But then वही बात है, since I can do along. It's not just I think it's about we, the different people that joined the journey, as a part of the team, and so I think because they think that they can do it, they think they are equipped. In the journey, they are also upscaling themselves, learning themselves. Plus, they are willing to do that,
राइट, उनके पास वो एबिलिटी कर सकते हैं एंड वो करना चाहते हैं, दोनों चीजें। एंड इसीलिए बस यही बात है, साउथ बिहार में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो रही है। बिल्कुल, lovely, lovely. So coming to my next question, okay, so I have known you for quite some time now, and Right. this was one of the things that I was really curious to know, in a sense. So we saw Shreyas Bajoria as an entrepreneur, we saw Shreyas Bajoria as an activist, we saw Shreyas Bajoria as a leader. So what do you think is Shreyas Bajoria as a person? That's a difficult one. Shreyas Bajoria as a person, यार, jack of all, master of none, still better than master of one. Right, the entire phrase has to be put in perspective. So वही है यार. So मेरे LinkedIn में आप जाओगे ना कभी, या in fact I think it's more, it's not only on LinkedIn, something somewhere else also I'm forgetting. So that there I talk about the concept called diversion. So कि आपका diversion क्या है? लोगों का diversion होता है कि they can act, paint well, they can handle crowd well, they can speak well and all of that. I think मेरा diversion है कि that I can strike balance between things, maybe work out things and still be good with people. Right. So I think that's my diversion, to maybe assume different roles throughout the day, throughout the time, and just strike balance between them. Lovely, lovely. That's great to know. Okay, so coming to my next question. First of all, congratulations for, as you have published your paper in the international conference, and first of all, very congratulations on that. That you're also a national record holder on that. I'm really happy to say this to all the viewers here. Through Daksha, how are you planning to see consumer perception for the good? Okay. So, okay, this is very interesting. Interlinking two different things done at two different point of time. The conference and the paper happened like 5 years back. That's something that's more recent. I think happened like a couple of years. So I think that was more of a academic thing, right? So academic thing, because I went to Meghalaya, presented to an international seminar, and then eventually I think it took more than a year. The paper was after peer review and all of that. The paper got published in an international journal. And then I think that is something that happened quite recent, a couple of years back. So I think I can relate it to one of the things that, the ability to take challenges. I'll tell you how and why. Because this particular conference that I'm talking about happened in 2017. I was still in college, and in Meghalaya. So it was international seminar on, I think, HR or digitization. I am not very sure with the name. And I was the youngest delegate there, because it was hosted by the Department of Business Administration, the MBA kids. And all the other delegates who were presenting either were research associates, research fellows, or professors of different colleges, and universities. And I was just an undergrad, not even graduated by then. So it was in itself a very terrifying moment. And I had planned it in a way that I was traveling alone from Guwahati to Meghalaya. I think that particular trip, instated in me the ability to take challenge. I think that's the biggest takeaway, right? So that is one. I think that, and also that conference was outside my college. I think my biggest presentation ever. So in different university, in different setup altogether. So because before that, I have presented in various seminars, various conferences, and not conferences, various competitions. But I think presenting in and a setup of such a high magnitude, it was in itself a very elating yet terrifying moment. But it instilled that confidence. Whenever I stumble in life today, wherever I stumble in different sectors, different abilities, whatever I do, I just think upon the time that I was a young 21-year-old, just in college, still in college, was able to take that solo journey from Kolkata to Guwahati and then to Meghalaya, unknown people, unknown of where I'm staying, how would I go? I didn't plan anything, and and took that
thing upon myself, delivered that presentation, won the best paper award, and eventually which got published, and eventually I was, felicitated with the best, national record and all of that. So I think that tells me every time I look forward on that memory that it does not matter however tough or uncomfortable it is presently, if do it well and just keep doing it better, it will get better eventually, right? So I think it's important for us to get uncomfortable. I always had an option to postpone that, not postpone, to cancel that conference, because I was just an undergrad and it wouldn't matter to them, right? But still, I took upon that journey. I would say first the journey and then the conference, both of them. And to make matter worse, my teacher guide, my project guide, who was a professor back in Xavier's, having nothing back, keeping no offense to him, not holding anything back. He didn't come with, because he had certain other venues, certain other things, certain preoccupation there back in Kolkata. But then I took that journey, did that presentation, did that conference, met a lot of different people, created some great connections, whom I'm still in touch with. Still cherish that journey, still cherish that moment to this day, feeling like I'm almost 5 years now. And वहाँ से सबसे बड़ा मेरे लिए आई थिंक लर्निंग यही रहा है, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल इट गेट्स, और कितना एडवर्स आप हो जाते हैं ना, वो हम लोग 10th में मेरा आई थिंक हम लोग सभी पढ़े थे, एक प्ले था स्कूल में, एज यू लाइक इट. सो उसमें ना स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, काफी फेमस लाइन है. सो आई थिंक बहुत जरूरी है टू गेट इनटू एडवर्स सिचुएशन, बिकॉज़ दैट इज वेयर यू रिफ्लेक्ट योर ट्रू सेल्फ. मैं वही आज कुछ दिन पहले ऐसी बात हो रही थी, नहीं तो यार अगर आज मुझे कोई बोले ना, शायद मैं 4 बार सोचूं कि 21 ईयर मैं अगर उस स्टेज पर रहूं कि करना है नहीं करना है. उस समय पता नहीं कौन सा पैशन था, करना है बस, ट्राई करते ये भी, एंड हो गया. कोई बड़े शहर रहते, कोई दूसरा शहर रहता तो पॉसिबल था. मेघालय रिमोट सिटी, रिमोट तुरा था वो भी, नॉट इवन द बिगेस्ट सिटी इन मेघालय, ठीक है. सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग, बट अगेन आज वहां से जो इंस्पिरेशन ड्राइव होता है वो मुझे आज तक हेल्प करता है, आगे ये भी करता रहेगा. तो ये सबसे बड़ा लिंक रहा है मेरी फॉर presenting that paper and getting that published henceforth. To not only that, I think everything that I did eventually, even MASH, even Daksh, even Sakshiyat for that matter, कि challenge लो, देखते क्या होगा. ना next moment is the most important thing. वही वाला बात है. Yeah. So I mean, if I add to that, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि because I'm also an undergrad now, and मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत जरूरी होती है चीजें ये सब, एंड कहीं ना कहीं वो सिचुएशन ना बहुत इफेक्ट करता है. आपके सराउंडिंग सिचुएशन क्या हो रही है, आई थिंक दैट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, है ना. या राइट. सो आई थिंक सो ये एक प्रोवर्ब भी है कि यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, राइट. सो मुझे तो लगता है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सही चीज है कि आप अपने सराउंडिंग से जितना सीखते हो, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मोटिव एंड ऑल्सो द बिगेस्ट डेटरेंट टू एनीथिंग. अगर आपका ग्रुप जो जिसके साथ पढ़ते हो या रहते हो, इफ दे आर अवर्स टू जस्ट से बैड हैबिट, आई वोंट से बैड हैबिट्स, जैसे से नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव डूइंग, सो यू वुड बी मोर अवर्स टू डूइंग दैट. बट on the contrary, if your group is always like ठीक है, थोड़ा सा laid back है and all of that, so I think आप भी थोड़ा सा वो चीज आने लगता है. there is some total of things that happens around you, so वो चीज होता ही है. तो मेरे साथ हमेशा से I have been very lucky with the kind of people that I surround myself with and the kind of people that I got in this entire journey, especially when school moved out to Kolkata and all of that. So मेरा फ्रेंड था कॉलेज में जो पहले एक कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके आया था, एंड वी यूज्ड टू टॉक लॉट एंड हम लोग हर चीज डिस्कस करते थे, टू राइट पेपर्स टुगेदर. आई थिंक that I think meeting him and discussing with him that particular thing has always helped me in doing writing papers and getting into academia. So this was my 3rd paper, by the way. I didn't do papers before that.
So I think वही होता है. It's very important the kind of people that you meet with. Even आज I'm pursuing my CSI. I have a lot of friends who are either out, मतलब have completed their course or left it or still trying to do. I think they are the reason I'm still with this course. I'm still pursuing it. जो remaining 4 पेपर बचे उनको भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. So I think that's the most important thing कि what are the kind of people that you try to connect with. And I think ये बहुत जरूरी है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ रुकना है. Yeah. मैंने बोला था हमेशा से कि स्टॉप होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. So वही है. I think I'll keep coming back to my previous answers to connect a link. So because these are the things that I have learned throughout the journey and just knitting them to form a picture. Right. So बस वही बात है. अग्रीड. तो जैसे आपने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज कि आपका सिचुएशन एंड ऑल कैसा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी ये भी चीज है कि आप किस कंडीशन में हो उस टाइम पे. ऐसा हो सकता था कि आपके टीचर आपके साथ हो और उस टाइम पे आप या फिर आपको कहीं और जाना होता, कुछ भी हो सकता था. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके उस टाइम टीचर आपके साथ नहीं थे एंड देन यू डिड इट ऑन योर ओन. तो बहुत ज्यादा वो चीज एक बहुत ज्यादा इफेक्ट लाता है इस चीज में. ऑफ कोर्स ये चीज तो होता ही है. आप डिपेंडेंट नहीं होते हो. ये चीज तो होना ही होता है. Like I recall a very old story. I think something like 10-11 years. So हम लोग का फैमिली ट्रिप था, रोड ट्रिप था. And I think something happened. I don't remember very faintly. Then I was very angry and I told my elder sister कि यार आप देखते क्यों नहीं है कोई भी चीज. मतलब हम लोग सब चल रहे हैं, हर चीज पापा ही क्यों देखी हुए. I don't know why. I was very young. I was still in school. I think 6-7 का ही बात है ये, 10-12 years back. So and then she said me one thing, यार because with kind of people I am with right now, मुझे सोचना नहीं है, मुझे कुछ देखना नहीं है. अगर यही मैं अकेले कर रही होती. I think she had graduated. She had passed out of school. She was in college back then. Wisdom उस समय नहीं था. So अगर मैं अकेली होती तो ये चीज ऑफ कोर्स मेरे को देखना होता. I think it was certain, I think some tickets booking or something. So उस समय समझ में नहीं आया, but आज in fact अब ये चीज समझ में आई है कि चीजें circumstances आपको हमेशा शेप करता है कि how you come out of it. कुछ लोग not कुछ लोग I think either we can take that circumstance as a deterrent कि यार इसके वजह से ये नहीं कर पा रहा, जो मैं कभी कभी करता हूँ. आई एम ऑल्सो गिल्टी एज चार्ज्ड. बट कुछ लोग ले सकते यार ये था करके दिखाना था, यार है तो है, देखते क्या होगा. आई थिंक होता है, मतलब डेस्टिनी कह दो, प्लानिंग ऑफ द ऑलमाइटी कह दो, जो कह दो. But बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस सर्कमस्टांस में यू क्रिएट योर ओन वे एंड सो दैट्स अबाउट इट. सो ये बहुत जरूरी है. वो एक स्टोरी मुझे आप जैसे पूछे क्वेश्चन तो वो स्टोरी याद आ गया कि हाउ यू आर, योर सिचुएशन, योर कंडीशन डिफाइंस. आई थिंक इट्स नॉट डिफाइंस. आई थिंक यू इट इज ऑन यू हाउ मच यू लेट इट डिफाइन यू. यार उस कंडीशन को पकड़ के आप रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. बस उस कंडीशन को स्टार्टर करके आप आगे बढ़ोगे तो आप बोल सकते ना, लिव टू टेल अ टेल. बात है. सो भाई बिल्कुल. Okay, so going to your next question कि आपका प्रोफाइल कहता है कि you were very active in your school days and college days. So how that has affected you in life in general? Immensely. मैं स्कूल में एक्टिव नहीं था, honestly. I was just and let's just say toppers का bottom feeder था, averages का genius था. So I was just in that category, जो transition category होता है, मैं उधर था. So top 5 में कभी नहीं आया, but top 12 में कभी बाहर भी नहीं गया, वैसा कैटेगरी में था मैं. So I wasn't a very studious, but मुझे स्टडीज ही हमेशा लगता था. हाँ, स्कूल में कभी 1-2 बार इधर here and there. If my friends are watching from school, उनको पता होगा मेरा singing competition. Anyone who passed through St. Joseph Agalpur from 2012, 11, 13 batch, उनको पता होगा कि singing competition में क्या हुआ था. So yeah, I tried thanks, नहीं workout किया. Towards the end, 11, 12 के तरफ, I got quite active in debating and quiz, especially ये सब में.
And I think the major transition happened when I went to Xavier's, Kolkata. Of course, it's the people, of course, it's the opportunity. वो सब चीजें थी. एंड मुझे था कि यार सब कुछ करना है, जो है सब करना है. ठीक है, समय ही समय, अब तो घर के बाहर है, पूरा 24 घंटा जो करना है करो. और हमेशा से मैं सारे कॉम्पिटिशन में करा. फर्स्ट डे एंट्री वाले जितने भी फ्रेशर्स के इवेंट्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन, सब किया. सारे सेमिनार्स में गया, सारे टॉक शोज में गया. मतलब मैं शाम की कॉलेज थी मेरी, 4 साढ़े 4 बजे वाली. मैं सुबह 8-9 बजे कॉलेज को चला था, 9-10 बजे रोज. ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, करते रहता था. लोग बने, दोस्त बने, नए चीज सीखे, कॉम्पिटिशन किया. फर्स्ट सेकेंड ईयर कुछ नहीं जीता, ऑनेस्टली कुछ नहीं किया. इंटर कॉलेजेस भी गया और गंदा 5-6 भी नहीं, 10th लास्ट, सेकेंड लास्ट आता था. बट देन करता रहा, बिकॉज आई थिंक प्लेसेस लाइक Xavier, प्लेसेस लाइक दैट बिग institutions or organizations, आपको ये है ना कि there are a lot of people, so even if you fail there's no one to see, no one to make a foul cry about it. I think that helped me a lot. यार हारेंगे क्या जा रहा है, पता नहीं चल रहा है. 1000 रजिस्ट्रेशन है, नहीं होगा. ठीक है, सो करता रहा. एंड आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी ऑफ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. सो मुझे इनफैक्ट कॉलेज से निकले 3-4 साल हो गए, आज भी मुझे डिफरेंट इवेंट्स सबके मेल्स आते रहते हैं. सो हर जगह जहाँ मिले नंबर ईमेल आईडी दे दो, हर जगह वैसा आदत था. सो वो चीज का फायदा आई थिंक मुझे आज मिलता है, या थर्ड ईयर में मिला. थर्ड ईयर में चलो बहुत सारी कॉम्पिटिशन जीता, इंटर कॉलेज जीता, नेशनल जीता. ठीक है, सो आई थिंक वो तो था ही. एंड बिकॉज ऑफ दैट जर्नी हैड अ स्वीटर एंडिंग. आई थिंक दैट टेल्स यू अ टेल कि इफ यू कीप परसिस्टिंग यू विन, राइट. एंड उस समय जो आज शायद पब्लिक स्पीकिंग जो है, या फिर आज शायद लोगों से बात करने की एबिलिटी है. तो अगर मैं कॉलेज में डिबेट या प्रेजेंटेशन या सेमिनार्स में नहीं जाता तो शायद आज वो ग्रूम नहीं होता. चाहे थिंकिंग ऑन माई टोज वाला जो फ्रेज होता है, आई थिंक कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू डेवलप, राइट. इनफैक्ट बहुत बेसिक हाउ टू राइट अ कंटेंट वो मुझे कॉलेज सिखाया. हाउ टू इनफैक्ट राइट अ पेपर मुझे कंपटीशन में सीखने मिला है. मेरी जो पेपर थी कंज्यूमर परसेप्शन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वो एक कंपटीशन से डिराइव हुई है. सेकेंड ईयर के एक इंटर कॉलेज था, IIT BHU बनारस वाली. सो उसकी कंपटीशन थी, वहाँ पे ओयो वाज वन ऑफ द स्पॉन्सर आई गेस. सो उनका कोई केस राइटिंग कंपटीशन था, वहाँ से ये आइडिया आया है, वहाँ से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, एंड देन इट फाइनली टर्न्ड अपॉन turned into a paper, academic paper, and then presentation and all of that. So I think it was because of these competition, everything connected with one thing to other. और मैं तो हमेशा से आई हैव बीन वेरी वेरी वोकल, वेरी आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द फैक्ट कि आप कॉलेज में जो मिले करो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वेरी सॉफ्ट स्किल लाइक डांस मत करना, नहीं आता मत करो, सिंगिंग नहीं आती मत करो, बट कॉम्पिटिशन्स में जाओ, सारी कॉम्पिटिशन्स में जाओ, सारे इवेंट्स में जाओ, सारे वर्कशॉप्स में जाओ, कर सकते हो जितना. ठीक है, टॉक शोज में जाओ, बिकॉज आप बेटर आदमी बन के निकलोगे. नेवर अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग 0.1% to 1%. ठीक है, नेवर अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. बहुत अच्छी स्टोरी है, सम मिड 1950s 1960s. अच्छा नहीं, ये 1950s वाली तो पुरानी है. ये है हमारी इंग्लैंड की बाईसाइकिल टीम के बारे में. सो उसका स्टोरी ये है कि उनके जो कोच मेंटर सर जो थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत बेसिक चीजें को शुरू करो. ठीक है, बहुत बेसिक चीजों को सही करना शुरू करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही स्टार्टेड स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीजों को सही करना शुरू करो. And then because of that improvement, very minimal improvement, that small minuscule team जो कि बहुत फेमस थी, बहुत छोटी सी टीम थी, उनके साथ उन्होंने मिलके सर डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम था उनका, उनके साथ उन्होंने they won the international, I think some European championship or something. ठीक है, एंड अब सर डेव ब्रेल्सफोर्ड सर्च करना तो पूरा स्टोरी आएगा, हाउ 1% रूल या मिनिमल चेंज कैन make a huge difference. Right, एक बहुत फेमस, बहुत जगह इंटरनेट पे काफी आता है, the power of 0.1. 0.1 घटा दो या 0.1 जोड़ दो तो कितना डिफरेंस आता है, राइट. सो ये चीज होता है यार कि पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव एक्शन
adds up, but negative action compounds. So लोग बोलते हैं यार कोई चीज की गंदी आदत लग गई ना वो बढ़ता जाता है. पॉजिटिव एक्शंस भले स्लो है बट इट एड्स अप. एंड नेगेटिव एक्शंस का ना रिजल्ट प्रेजेंट दिखाएगा, बट पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थॉट्स का एक्शन आपको हमेशा फ्यूचर में दिखेगा. ये टू बिलीव तक कि वो चीज होगा. राइट. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप करते तो रहो, ऑफ कोर्स होगा. कॉलेज में यही चीज मुझे हमेशा हेल्प किया है. निकलते निकलते आई थिंक कुछ 7-8 कॉम्पिटिशन्स जीते, दोस्त बने, हर तरह का एक्सपीरियंस भी मिला, डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस मिला, सबसे बराबर डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला. जो मैं तो बोलता हूँ आज जितना बुक्स ने मुझे सिखाया उससे 1000 टाइम्स मोर मुझे ये इवेंट्स कॉम्पिटिशन ने सिखाया. तो ऑफ कोर्स ये बोलता हूँ, बट इट वाज, आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू जेवियर्स फॉर दैट अपॉर्चुनिटी दैट इट गिव्स, द अपॉर्चुनिटी दैट इट गिवन मी. या सो ये तो बात बिल्कुल सही है. मैं इस पे टोटली एग्री करूंगी. एंड एडिंग टू इट, मैंने ना कहीं सुना है, सीन इन सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोस और समथिंग लाइक दैट, कि एक देयर वाज वन पब्लिक स्पीकर समथिंग लाइक दैट, he told in that it was a conference or something like that. तो he told कि कॉलेज जो होता है वो पढ़ाई तो उसका सेकेंडरी पार्ट होता है, एंड मोर ओवर आप नेटवर्किंग करने जाते हो वहां, और जो वहां पे कोकुलर एक्टिविटीज होता है उसमें जाते हो. मेनली आप पैसे आपके कॉलेज को पढ़ाई के लिए नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो इन सब चीजों के लिए. तो दैट थिंग एकदम मेरे दिमाग में बैठ गया वो ये चीज. तो बात तो सही है. और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना वो चीज और बढ़ता जाएगा. अंडरग्रेड में होती है, एमबीए में या फिर मास्टर्स में और ज्यादा होती है ये चीजें. बिल्कुल. ओके, लवली. ओके, कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, कि as you're here, how can we not talk about your book Sakshiyat? Can you just brief us about that? यार ओके, सो इतने सारी चीजें आपने पूछी कि व्हाट वाज दैट इंस्टेंस या व्हाट वाज दैट ट्रिगर या व्हाट वाज दैट मोमेंट. तो बाकी सब चीजें तो मोमेंट इंस्टेंस नहीं थी, बाकी सब चीजें तो प्रोसेस और सिस्टम थी. शख्सियत इंस्टेंस थी. ठीक है, शख्सियत वाज अ ट्रिगर, शख्सियत वाज एन इंस्टेंस. सो माय फ्रेंड, एल्डर ब्रदर, not elder brother, but elder brother ही है, plus publisher of my book, Subham Bhaiya. So randomly ऐसे December, I think December, November, December बात हो रही थी, and then like भैया बुक लिखना है यार. इतना सा बात हुआ बस, भैया बुक लिखना है कभी. उनका पहला रिप्लाई, तुम पागल है क्या, करवाता हूँ मैं, तू भेज ली स्क्रिप्ट. I took 10 days. So I had this habit of writing. ठीक है, हमेशा से था, स्कूल से था. कुछ भी हिंदी इंग्लिश, पहले इंग्लिश लिखता था ज्यादा, एंड देन कोलकाता जाके एंड थिंक इवेंचुअली वो हिंदी में आ गया. एंड हिंदी इंग्लिश, एंड आई यूज्ड टू राइट ऑन एनीथिंग, कुछ भी ऑब्जर्व किया, ऑन एनी फीलिंग, ऑन एनी पीपल, एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसेस. एंड कहते हैं ना कि एज अ person you live one life, but as a reader or writer you live multiple. तो मेरा भी वही था कि सिचुएशन सोच के, कुछ भी सोच के, कुछ भी इमेजिन करके, कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, वहां से इंस्पायर होके कुछ भी लिखता था. तो करते करते एक अच्छी खासी करीब 80-90-100 कंटेंट स्क्रिप्ट्स बन चुके थे हमारे पास. तो उनको भेजा, उनको पसंद आ गया, थोड़ा सा वर्क किया हमने, एंड 2 महीने के अंदर वी लॉन्च्ड इट. इनिशियली काफी अच्छा, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, बट देन इट वाजंट helped a lot by pandemic. हमने February end में launch किया and March में pandemic started on. But then I'm still happy that I did it. As I said, करते हैं, देखते क्या होगा next moment. So I'm still very happy I did it. I'm still very glad that I did it. And I think it's just a collection of all the things that I talked upon. Of course, it's a collection of different things that I see, I observe. मेरा थोड़ा सा ये कि डिटेल ओरिएंटेड हूँ, थोड़ी चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ. बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली it's a collection of different kind of feelings, different kind of emotion that people go through in their life. So if you are a person of coming of age person, या if you are a teen, or if you are a person middle age person, so आप हर तरह की स्टोरीज और सिचुएशंस को आप रिलेट कर पाओगे उसमें. ठीक है. सो शख्सियत एक वही is a collection of different abstract. Again 5-6 साल लगा कलेक्शंस को पूरा होने में. सो दैट्स हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस. करना था, कर लिया.
Yeah, and I'm so happy that I did. So lovely to have that कि आपका book बहुत अच्छा, and I hope कि भी और लोगों से पढ़ें and it's a success that it deserves. जरूर. Yeah. So that's all for today for our talk section. Coming to our short section, we have a very quick rapid fire. Okay. So we have, I guess, 5 to 6 questions are there, and you have to answer it in a word or a sentence. Okay. 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 First question: what keeps Shreyas Bajoria going? Every day waking up and thinking what to do next. Okay, great. Your go-to movie? Yeah, a lot of them in fact. So I this playlist in my laptop जिसमें बहुत सारी movies है, करीब 30-25 movies है. So but again IMDb top 50 minus Marvel and DC. Okay. One thing that Shreyas Bajoria loves in his leisure time, which people doesn't know about. Writing, of course people know that. People don't know about maybe binge watching. Okay. Maybe binge watching. मैं कुछ 3-4 ही आज तक सिटकॉम देखा हूँ, मैं वही सब देखता रहता हूँ, like Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, Suits, यही सब 3-4 देखा हूँ, and I keep repeating them. Great. Your favorite music genre? Yeah, soulful. Anything which is soulful. I think mostly Sufi mix, mostly. Okay. One book which has left an lasting impact on you? Yeah, I talked about it. Atomic Habit. Great. Again, can I add another book to it? Yeah, sure. 0 to 1. Okay. It's by? Brilliant book. It's by? Peter Thiel. Okay, great. Okay, so here are a list of things from which you have to choose one. Okay, there are a couple of things, like 2 stated things are there in each segment, and you have to choose one. Okay, Daksh or Mash? Mash. Okay, business or social work? Social work. Okay. I hope this isn't there. Okay, continue. Professional goals or a writer? Writer. Any day writer. Great. Bhagalpur or Kolkata? Bhagalpur. Okay. Blog writing or book writing? Book writing. Any day book writing. But you have done couple of blogs, I guess. Yeah, still exist. Shreyas Bajoria blog search करो, कुछ ना कुछ पुराने पाप दिख जाएंगे. Okay, so this is the last question. One person whom you'll tag to come to my podcast. One person I tag. Yeah, a lot of them. Maybe I'll try. I'll even try if you can get Deepak. Okay. Deepak Parekh. Okay. I Great. really want him here because he's a very nice, gentle talker. Great person to talk to. Yeah. Again, he'll tell you things. Again, sometimes I when you hear him speaking, like wow. So yeah, Deepak Parekh. We'll surely get him if possible. Okay, so that's all for today. Thank you so much for coming, and it was an amazing conversation. Thank you so much for having me. Great. It felt so nice talking, about all the things, reflecting back on the journey. Sometimes I think we get so much tied up in our daily course and daily things that you don't take time to, reflect back on things. But really love the conversation here, the kind of passion that was there. So kudos to you and your team. So yeah, thanks for having me. Yeah, really grateful. Okay, great. Thank you so much to all the listeners also who are still watching us. And don't forget to like and subscribe the channel. And I hope to see you very soon. Definitely like and subscribe the channel.